So, good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to welcome all the seniors and fellow colleagues to discussion forum on how to respond to income tax notices relating to foreign bank accounts and foreign assets and disclosure requirements in ITR. I welcome our learned speaker for the day CA Avinash Gupta ji, past chairman NIRC. I welcome you, sir. I welcome all the members. Our President CA Ashish Agarwal ji will be unable to attend today's meeting as he is out of India. In his absence, CA Rajneesh Goyal ji, our Vice President, will be chairing the meeting. So I request now CA Rajneesh Goyal ji to deliver the welcome speech. A very good afternoon to all of you. In the absence of our worthy President C. Ashish Agarwal, due to some prior commitments, I, C. Rajneesh Goyal, Vice President of DTBA Direct Taxes, welcome today's learned speaker C. Avinash Gupta ji, ex-chairman NIRC, and all the members of DTBA Parivar. C. Avinash Gupta ji was kind enough to accept our request at a very short notice, in spite of having such a busy schedule. Sir, it is an honor for us to listen you today on this WebEx platform. This is our regular study circle meeting for the month of June. The agenda of today's meeting is how to respond to income tax notices relating to foreign bank accounts and foreign assets and disclosure requirements in ITR. It is a burning topic these days. So detailed discussion is the need of hour. CA Vinachi would elaborate us on all these new developments. It will be very informative and knowledgeable e-study circle meet today. I will not take much of your time as it is going to be an extensive learning session. So I request CA Varungar to carry on with the further proceedings. Thanks. Thank you, sir. I now request CA Aman Garg to introduce our learned speaker. Thank you, Varunji. I, CA Aman Garg, on behalf of all the members of DTBA, extend a very warm welcome to today's speaker, CA Avinash Gupta ji, past chairman NIRC of ICI. He is the fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. He did his graduation from Shri Ram College of Commerce, Delhi University, and was awarded the best student of the college. He was also in the merit list of ICA in the CA final. He is also law graduate and completed his LLM in international taxation from Vienna University, Austria, Europe. He has authored 3 books on international transaction, transfer pricing, and UAE corporate tax. He is also pursuing his PhD in law on the subject of taxation of digital transactions. He is also a regular faculty in UAE corporate tax and transfer pricing at ICA and various chapters. He was chairman of Northern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India for the year 2021-22. He is also secretary of SRCC Alumni Association. He is nominated as co-opted member of International Transaction Committee of ICI for the year 2022-2023. He is also past president of Tax Research Foundation, an NGO doing research in the field of taxation. He is a national treasurer of International Fiscal Association, India branch, a Netherlands-based body. He is partner in APT and Company LLP, chartered accountants having head office in Delhi and 18 branches all over India. APT also has a branch office in Dubai, catering the clients of entire GCC region. He has delivered more than 3,000 lectures at national and international level. He is a visiting faculty member at National Academy of Direct Taxes, Nagpur, and other regional campuses, Shri Ram College of Commerce, ICI, ICSI, ICWAI, and management institutes. He is also a faculty member of certification course on the international taxation for CAs. He was special invitee of Direct Tax Committee of ICI and International Taxation Committee of ICI. He has experience of handling various international transactions, including transfer pricing matters of big corporates. He worked as a finance analyst at PNG. He has won many laurels during schools, colleges, and CA student life. He presented many papers in international, national, and regional conferences on various topics of tax. He's a good orator and held many responsible positions. I welcome you, sir. Now over to CA Varun Garg. Thank you, Aman. I once again welcome our prolific speaker for the day. So now no more standing between you and the speaker. I request CA Avinash Gupta ji to start his deliberations. Sir. Thank you. Thank you, Varun ji.
respected President of DTBA in absentia, the Vice President of the DTBA, Rajneesh ji, for a nice introductory speech, and thanks DTBA for inviting me again to this study circle meeting. Special thanks for this goes to my elder brother Arun Gupta ji, who have called me and coordinated for the entire this program. Amanji, thank you for giving a nice introduction for the program. And I'll be failing in duty if I do not acknowledge the presence of Vikas Gupta ji, who have just messaged me in the morning itself that he is waiting and he will be joining it. So, though I know many of you, but Vikas ji is special because we are acquaintances to each other for a long time. So, sir, the topic of the day when we are discussing with Arun Bhai that what should be the topic, then we thought that we should deal with something which is coming day in, day out, specifically in the region where you are located. So Arunji have told me that many of the SSCs, many of the people have received notices from the income tax department relating to the foreign bank accounts, foreign assets, foreign shareholding, etc., etc. So now, what to do with these things? Whether we should go ahead, what should be the way to handle all this? So that's the topic what we have suggested, what we have discussed, and we need to take care of that. So before coming about how to handle it, let us first understand from where the information is coming. So अंशुल जी बहुत सारे नोट दिखाई दे रहे हैं, कुछ इधर भी भेज दो. तो अपन कर लिए उन्होंने. So the question is coming to Government of India under the exchange of information. So we have this exchange of information treaties with all the countries where we have a DTA. Under the DTA, there is a provision called as exchange of information. Under this exchange of information, there is a protocol. Hello. Which have been signed by many governments, including India, and what is exchange and what is automatic exchange. For example, Income Tax Department want to know about that. Okay, Mr. Arun Gupta, chartered accountant from Ludhiana, have a Sir, please unmute yourself. Yeah. Okay, you are muted, everybody. So, for example, what I have said is Mr. Arun Gupta is having a Swiss bank account, and Income Tax Department knows about it by whatever means, whether he himself have declared in the books in the return, or the information have come from somewhere, and from there this information they know that he have a bank account. Maybe he is having a coordinates, he may not be having the Income Tax Department may have the coordinates, account number, etc., or they may not have coordinates. So under the exchange of information, the Income Tax Department, normally Article 26 of the treaty, Income Tax Department have a right to write to a foreign country or to the competent authority of a foreign country to get this information if any proceedings is pending against the SSC or against the person, and the SSC have failed to provide such information. So the first opportunity need to be given to Mr. Arun Gupta itself, stating that we are under a possession of an information that you have certain bank account in such and such country. So you are requested to kindly provide us the information. That give me the statement, etc., when it is opened, how do you have done the funding, etc. Then in response of that, if he submits the entire information, then Income Tax Department cannot ask the foreign government to provide this information. Or if he denies the information, or if he says that he do not have an information, he said, yes, I have a bank account, but I am unable to provide you the information,
or he completely denies, okay, I do not have a bank account, that bank account do not belong to me, then only income tax department can go ahead and ask the competent authority of the other country to provide the information along with the details, whatever it have. So they may have a name, they may have a passport number, they may have other details. Based on that detail, the other government authority will provide this information if applicable. So that is called as exchange of information. Typically, it is on request. Then there is another protocol which have been added way back in 2015, effective from 1st of October 2019. Please note the date, this is very important, 1st of October 2019. So with effect from 1st of October 2019, there is a new protocol which have been signed by the various governments under the banner of Tax Transparency International, where the government have agreed to provide the financial information of the citizens of various countries. So अगर अब गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन मांगने की आवश्यकता नहीं है, then simply the information will be available to them by a online system from an international database. So स्विट्जरलैंड के पास जितने भी अदर देन स्विस के अकाउंट्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन स्विट्जरलैंड उस पोर्टल पे अपने आप डाल देगा, एंड फ्रॉम दैट पोर्टल यूएस वालों की यूएस को चली जाएगी, यूके वाले की यूके को चली जाएगी, और इंडिया वालों की इंडिया को आ जाएगी. सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट भी इस पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डालेगी फॉर ऑल द अकाउंट्स दैट दे होल्ड और ऑल द एसेट्स दैट दे होल्ड अदर देन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स. सो वो जो अदर देन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी उनकी इंफॉर्मेशन अपलोड करेगी. एंड दिस गोज ऑन in the entire world. So Cayman Island is also signatory to it. Isle of Man, IOB is also signatory to it. BVI is signatory to it. So now Government of India is getting information from all over the world, including Cayman Island, British Virgin Island, Mauritius, UK, Switzerland, US, from everywhere. Wherever an Indian passport is being used, or the nationality that you have mentioned is an Indian, along with an Indian passport, that information, if it belongs to a bank account, if it belongs to a fund, if it belongs to a beneficiary of a trust, if it belongs to a mutual fund, if it belongs to a share, or if it belongs to any other financial asset, and in some cases land and building also. So if this information is available to the government, then this government, the other government will automatically give this information in a system, and from that system the information will flow to India. और ये सर हमारे पास 2019 से ये information आ रही है, and that information is tons of information. Apart, we have Panama leaks, we have the stolen data of HSBC Bank, and we have a couple of other sources from where this information have pop up into the system of the income tax department. So now income tax department have all the information. उनके पास कि ए पर्सन का ये बैंक अकाउंट है जिसका 31 दिसंबर 2018 का बैलेंस ये है. Because the first information which have come is in October 2019, belonging to a previous year, and calendar year they are treating it as a previous year. So Cayman के जितने भी फंड्स हैं सबके बेनिफिशियरी की स्टेटमेंट 31 मार्च 18 की है, 31 दिसंबर 18 की है, 31 दिसंबर 19 की भी they have this information, and this information is been popped up in India, and from there the income tax department have taken this information for assessment purposes, and based on that they are doing an artificial intelligence. Wherever the passport is linked with Aadhaar, wherever the passport is linked with PAN, or wherever there is any other data which is linked with the PAN number, and they are able to establish that this belongs to this particular person, so then they are going ahead with the information and they are starting doing an due diligence or investigation in this particular process by a unit called FAIU.
Foreign Assets Investigating Unit. So that's the separate unit that they have created within the DI investigation. I don't know about Ludhiana. In Delhi, we have 6 units which have been established as FAIU 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there are 3 additional commissioners who have been appointed to oversee these 6 units. So that's the kind of data what have been populated or the working is going on. Only in Delhi, there are about 6 plus 3, 9 senior officers who are working on this particular data. That is, they are issuing the notices and all this. So जहां जिसकी information collaborate हो रही है, हो सकता है कि आपका जो passport लगा हो, that is not linked with Aadhaar, that is not linked with PAN, but the person have renewed the passport. On the renewal, he has to give a Aadhaar number now mandatory, or a PAN number should be attached to it mandatory, or he have filed a return of income. In that return of income, he have given a passport number in the ITR that he have filed. From there, the system is linking this information, and once the information is linked, then they are taking out the information of the person, then they start working on it. So that is how the information is being gathered by the department. So we as an professional who have to deal with this particular statement, we should know that from where this information is coming. Now the information have come to the department. Now the first notice what you receive as an SSC or your client receives as an SSC is that according to the information available with us, there are certain foreign assets which are in which for the information for the same is there with us. So kindly provide us all the information as given in the annexure. एंड एनेक्शर में आपसे पूछता है कि आप हमें सारे फॉरेन एसेट्स की डिटेल दीजिए, आप हमारी सारी फॉरेन इनकम की डिटेल दीजिए, फॉरेन विजिट्स के बारे में बताइए, और आपने जो उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्या इस बैंक में आपका कोई अकाउंट है, क्या इसमें. तो लाइकवाइज दे मेक अ 3, 4, 5 क्वेश्चन about the information what they have, and they ask you to come either in person or through an AR before the Income Tax Department investigation unit, and then you have to represent and tell them what are they. लिंक मे भी लिंक टूट गया, 1-2 मिनट दोबारा. लिंक टूट गया, कोई ना कोई. Kindly करके 2 बार ही. So please unmute. Yeah, can you hear me now? Yes. Yes, sir. Yes. Now, okay. I think somebody have done some changes from the backend. हाँ जी सर. Okay. I think someone have changed some on the backend, so that's why it went wrong. Give it. So where I was saying that whenever a person is coming with a notice, the first thing what we have to ask him is about whether the person have a bank account or a foreign asset. If answer is yes, then when it was opened and from where the money have come. So these are the 3 preliminary things what we need to ask. The next question that we need to check is name has been disclosed
disclosed in the previous years ITRs filed by the SSC or not. There may be a case where the SSC have not at all filed an ITR. उसने फाइल ही नहीं किया ITR. जब ITR ही नहीं फाइल किया तो ये फॉरेन एसेट्स में डिस्क्लोज नहीं हुई होंगी. Now there are cases where we have found that the people are there in whose name the foreign assets are there, but they are not filing ITR in India because they may not have a taxable income. So if this is the case, then don't worry. So you need to just see whether ITR is liable to be filed or it is not liable to be filed. If it is not liable to be filed, there is no need to file any ITR just to disclose your foreign assets. But if it is liable, then the second question comes: why he have not filed the ITR? Then if I have not filed the ITR, forget about it. कोई बात नहीं, sir. Then we have to go to a second test in this case, is from where the money have come. So विकास जी, आपको ये देखना है कि इसमें जो पैसा आया, the initial funding, for example हमारे पास कोई कंपनी है, उस कंपनी की शेयर कैपिटल में हमने 50,000 रुपए लगाए. हमारे पास कोई फंड है, उस फंड में हमने जो है एक लाख डॉलर लगा दिए. कोई बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में इनिशियल कंट्रीब्यूशन $10,000 का था. So then I will ask the person, or I should ask the person, from where this money have come, whether this money is a disclosed money or this money is an undisclosed money. Sir, if this money is an undisclosed money, तो सर आप मान के चलो कि उसका कुछ नहीं हो सकता. सर, you have to pay the penalty and you have to pay the tax for that. So there is no second way to leave or to save this kind of an SSC who actually have a foreign assets for which source is not disclosed. Then comes the second part, where the source is disclosed and we know that source is out of the tax-paid money only, and the money which is earned or which is repatriated to the company or to the foreign assets is a legal money, but the same has not been disclosed in the ITR filed, or ITR have not been filed at all. So मेरा पैसा जो था वो लीगल मनी था. मेरा पैसा जो है वो मैंने प्रॉपर चैनल से भेजा, या जहां से भी मैंने क्रेडिट पेमेंट कर दी, या मैं फॉरेन एक्सचेंज से जो है उससे लेके गया था करा के डॉलर, मैंने डॉलर में जो है $50 या जो भी देना था वो देके मैंने उसको पेमेंट कर दी. अब मेरे साथ जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो जिस पैसे से हमने काम शुरू किया, या जो उस बैंक अकाउंट में जहां से भी पैसा आया, वो पैसा जो है वो नॉन सोर्सेज से था, और उसके ऊपर या तो इंडियन इनकम टैक्स बनता नहीं था, या अगर बनता भी था तो मैंने उसको पे कर रखा है. So I am across cases where the information have come to the department where the in the funds of the of a fund, overseas fund, and the person is a person who is a salaried employee. So he is a salaried employee. From this salary only he have invested this money in the fund, and he has not disclosed this particular fund in his return of income, but the money invested in the fund is out of the salary money, and fund have not given anything back to the person, meaning thereby the fund have not declared any dividend, or the units are still held by the person. So whenever he will sell it, he will declare the capital gain on it, but this fund, the value of the fund, the units of the fund have not been disclosed in the ITR itself. The officer will say that he will treat it as a black money, and he will open a case under the Black Money Act, because he said you have not disclosed the things in the ITR. So इस तरह का केस है where only the disclosure have not been made, but the money what he has received is a legal money. Tax have already been paid, if any due. Then in that case, sir, no need to worry at all, because the Black Money Act is that it will be when
the money have escaped the assessment and tax have not been paid on it. So once the tax is being paid on it, then you cannot open a bank account, you cannot open a case under the Black Money Act. तो आपको जो है ब्लैक मनी एक्ट में आपका केस नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो पैसा है वो क्या है, वो आपका टैक्स पेड मनी है. बट अगर आपने लिए खुल भी गया है तो उसके अंदर आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन नहीं करी जा सकती, बिकॉज द मनी इज अ टैक्स पेड मनी. Another scenario it will come is that, हाँ विकास जी बताइए, आपका क्वेश्चन है. सर पहले भी चलो डिस्कस हुआ है, चलो इस प्लेटफॉर्म पे भी बात करते हैं. डिक्लेयर तो हमने किया हुआ आईटीआर में, समहाउ हमने वो जो फेमा वाला प्रोसीजर है वो नहीं फुलफिल किया थ्रू आरबीआई, थ्रू बैंकिंग सिस्टम. तो उस केस में, इन केसेस में कैसे डील करेंगे? रिटर्न में हमने डिक्लेयर कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग, बट वो जो बैंकिंग चैनल वाला प्रोसेस भी हम कंप्लीट किया, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि रेलेवेंट पॉइंट है ये. आ रहा हूँ उधर, अगले उसी पे आ रहा हूँ. Now the next step, which is that I have declared the investments in my ITR. I have declared the bank accounts. I have declared everything in my ITR. Merely declaration in the ITR does not satisfy you that the money which is invested is an disclosed, is all disclosed money, expect money. So हो सकता है मैंने जो है अपने 2 नंबर के पैसों से कोई फॉरेन में कोई विला ले लिया, फॉरेन में कोई मैंने अपने आईटीआर में डिक्लेयर कर दी. जब मैंने आईटीआर में डिक्लेयर करी तो एट दैट टाइम मुझे जो है किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया, या अगर मान लीजिए नोटिस आ भी गया तो उस नोटिस में उसने मेरे से वो नहीं मांगा, या जो भी मांग के जो भी करना था उसने कर दिया. So in those cases, अगर वो मेरा डिस्क्लोज सोर्स से नहीं है, then also the case will be reopened and be attached to the penalty, etc. But in those cases will be that I have already disclosed the same in the return of income, which is enough compliance, and penalty under black money cannot be levied because the same is disclosed. Now, Vikasji, what is your question is that I have disclosed everything, let's say, and the money is also a tax paid money, but the regulations of FEMA is being violated, meaning there I have not adhered with the ODI regulation, or the money have also gone under LRS regulation. So अगर हमारा पैसा ODI से गया था और हमने कंप्लाई नहीं किया है, मीनिंग देयर बाय कि हमने UIN नंबर नहीं लिया या ODI का जो रेलेवेंट फॉर्म है वो हमने फाइल नहीं किया, तो सर इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है. So income tax is not concerned about the RBI compliances being made or not made. The only and only thing what income tax department needs to see is that whether the money is a tax paid money, known sources, or it is a black money, or it is a undisclosed money. तो पहली चीज तो ये होगी. दूसरा, अगर मान लीजिए आपको आरबीआई का कंप्लायंस कर भी दिया आपने, बट पार्ट कंप्लायंस करा, जैसे बहुत केस क्या होता है कि एलआरएस में पैसा चला जाता है, बैंक से गया पैसा एलआरएस में गया, बट वो ओडीआई में जाना चाहिए था. गोइंग इन द ओडीआई, द मनी हैव गॉन इन द एलआरएस. और बहुत सारे केसेस में इवन ओडीआई का पैसा जब इंडिविजुअल एलआरएस जाता है तो उसमें उनको they have to file form ODI and they have to do an annual compliance also. Even if an individual is sending money abroad under an LRS scheme, but if the money is going for 5 years, whether equity or preference or other category of shares, then in that case also form ODI needs to be filed, and annual APR filing, annual performance report filing should also be made by an individual. और वो बट वो हमने कभी नहीं, we have not done this particular reporting.
in the RBI reporting format. In that case also, I personally believe, sir, there is no problem. There is no problem at all in this case, because income tax department have nothing to do with the RBI compliances, whether it is being made or it is not being made. The only and only objective of an income tax officer, whether ACIT or DCIT, that the money have been properly from the known sources, and if there is any income on that asset or a financial asset or home or whatever the case be, if there is an income in the past years, whether the same income have been disclosed in the return filed by the SSC or not. So for example, say मैंने एक कंपनी बनाई बाहर, उस कंपनी को $10,000 जो है उसका इनकॉर्पोरेशन चार्जेस थे और मैंने कैश में दे दिए, या मैंने अपने LRS में भेज दिए, सर उससे इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है. जब उस कंपनी ने जब मुझे डिविडेंड दिया, अगर मैंने वो डिविडेंड की इनकम अपने यहाँ इंक्लूड करके उसके ऊपर टैक्स दे दिया, कंपनी के शेयर्स में जो है उसमें रिटर्न ऑफ इनकम में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे हुए हैं, सो दैट इज मोर देन इनफ कंप्लायंस द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज अंडर द ब्लैक मनी एक्ट. तो इससे ज्यादा मुझे जो है कुछ और काम करने की आवश्यकता नहीं है. विकास जी, आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी. हाँ जी सर, बिल्कुल. हमारे केस में भी ये हुआ कि हमने जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट की ना, वो छोटी सी अमाउंट थी, $5,000, बट जो हमारी अर्निंग थी एज ए सैलरी हमें मिल रही है, जो ऐसे डिविडेंड मिल रहे हैं, वो दैट वी हैव डिक्लेयर्ड इन आवर इनकम एंड पेड द ड्यू टैक्स. सो हमारे से गलती सिर्फ यही हुई है कि हमने वो ODI वाला सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया. तो इवन की थोड़ी मोटी इन्वेस्टमेंट हमने ऐसे भी शो कर दी कि वहां से बाहर कंट्री से बोरो करके हमने वहां पे इन्वेस्ट की है. इवन दैट थिंग आल्सो डिक्लेयर्ड इन आइडिया. ये आपने इन्वेस्टमेंट कब करी थी? 4 और 5 साल हो गए हैं. 3-4 साल से वो सारी इनकम डिक्लेयर करते आ रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं. इवन की जो मनी वहां पे भी पड़ी है ना अकाउंट्स में, हमारे अकाउंट्स में मान लो सैलरी पड़ी है, डिविडेंड पड़ा, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया. तो ओनली थिंग कि वी हैव नॉट अडॉप्टेड दिस ODI सिस्टम. वहां हमारा डिफॉल्ट है. सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो देयर इज अ रिलेशन. RBI and ED is the authority who have to take a step into it, but as far as income tax department is concerned, they are not concerned about the same, and there is no problem at all income tax purposes. And under the black money as well as under the Income Tax Act, Income Tax Department cannot take any proceeding, or they cannot levy any kind of a fee for that. ठीक है सर, ठीक है. Yes, sir. Any other questions anyone have? So let me take it now. Yeah, SSG have raised a hand. Sir, unmute कर लीजिए please. Good evening, sir. Good evening, जी. Sir, my question is that मेरे client की ना daughter abroad में है, इंडिया में तो उसकी taxable नहीं है income, लेकिन वहाँ पे नहीं है सर. इंडियन इनकम टैक्सेबल नहीं है, एंड शी इज स्टिल होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट. तो वहां पे उसके अकाउंट में काफी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एज अभी आपने जैसे बताया, अभी अगर इंडिया में टैक्सेबल नहीं है बट वहां पे काफी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इससे रिलेटेड आप प्लीज गाइड मी. जी सर. Sir, one more thing what I forget to tell you in the beginning, that these laws, including the black money law, is applicable only in the case of residents and ordinary residents. So this is not applicable in the case of non-resident. So as I come to know about your peculiar situation, the daughter of your client is staying abroad. So meaning thereby she must be a non-resident. Sir, even no, though she is holding an Indian passport. Yeah. So even if she is holding an Indian passport, but she is a non-resident, right? So whatever income accrue or arise in that bank account outside India, whether legal, illegal, or whatever way, Indian income tax authorities have nothing to do with that, provided
you prove to the authorities that she is a non-resident. So उसमें आपको non-resident के लिए आपको 120 यही तो दिक्कत है, नॉन रेजिडेंट भी नहीं है, वो इंडिया आ जाते हैं उतने बीच में आफ्टर हर स्टडी, जब भी सेमेस्टर वगैरह कंप्लीट होता है। तो सर अगर वो रेजिडेंट हो जाती हैं तो इन दैट केस आपको उसके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि उसके ऊपर वो इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, या उस पीरियड में जब वो थी या नहीं थी। अगर वो टैक्सेबल थी तो आपने टैक्स पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द टैक्स हियर, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन व्हाट कैन बी डन। नहीं, बस इसमें ये पॉइंट नहीं आता इंडिया में उसकी ड्यू ही नहीं हुई इनकम। सर क्यों नहीं हुई इनकम सर? इफ यू आर अ रेजिडेंट in India, resident and ordinary resident, your worldwide income is taxable, na? Correct. So income accrued or deemed to accrue or arise in India is taxable only when you are a non-resident. But when you are a resident, your global income is taxable. You understand, sir? Right, sir. Got it. Thank you. Okay. Subhash Jain ji, I think yes, sir. Subhash ji, namaskar, sir. नमस्कार जी बच्चे। अविनाश जी, एक केस में नॉन रेजिडेंट है, बाहर से उसने काम किया, उसको कमीशन अर्न की उसने, लेकिन उसको कमीशन, उसका एक इंडिया में अकाउंट था पहले, सेविंग अकाउंट था, वो बंद नहीं किया गया, उसमें डाल दी गई। तो क्या ये जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई उसको विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ NRI? Yeah. So sir, in your case, practically this is a commission income, but it is received in an Indian bank account. So the first received is in India. So as far as the domestic law of India is concerned, it is taxable. But we have a treaty benefit available to this person, provided he is a resident of a country where treaty benefit is available. So when he go to the treaty of that country, normally this income is not taxable, provided he takes out a tax residency certificate. So then this income becomes a non-taxable income in India. Otherwise, it is a taxable income. If he takes a tax residency certificate in Canada, then this income received in India, though it was accrued in Canada, because the commission was earned there. Subhash ji, एक मिनट सुनिए सर, under the treaty law, the DTBA, receipt of income is not important at all. Yes. So what is important is that where the income have accrued or arise, the commission income not accrue or arise in India. So it must be introduction of a international customer, etc. So in that case, it is not accrue or arise in India. So under DTA, the receipt is immaterial. So hence the DTA will give this benefit, and they say that this income is not taxable in India. Rather, the income will become taxable in Canada only. Right. Or even if income tax department उस केस में कोई black money का notice is not applicable, because income itself is exempt from tax in India. Right. Right. Thank you. Okay. Aman Agarwal ji. Hi, sir. Hello, sir, am I audible? Yes, Aman ji, please ask your query. So, sir, we have some business-related hedging accounts which we have held with the foreign brokers to facilitate our business, aluminium-related hedgings and copper, etc. So we have received notices from that foreign asset investigation wing relating that you have not disclosed those accounts in your ITR where you have earned the income, what is the source and per se. So basically it is the proceedings are when we discuss with the officer, they have said that it is under black money and you would be levied a penalty of 10 lakh rupees per account, etc., etc. But what we have, our view is something like that, because those are not held for any business income earnings per se, like interest or something, and these are required for the business purpose only. So there are basically two questions of our, do they actually need to be reported in our ITR form, or second, the notices which how we need to respond basically going forward to the officer? Actually, there's a practical case where many or all those people who are doing a hedging,
the broker opens an escrow hedging account outside India. Those are very normal activity of a broker or a bank who do a hedge. In many of my client case also, they have notices about it. Now, you need to say is in those cases that first of all is an hedging account. So there is no income which have accrue or arise to you an SSC. I agree that there is an account, but in that account there is no income which have accrue or arise to you, which is first. The account is opened not by a escrow banker, and that is to facilitate the bank account, the hedging transaction. In many cases, even the assessee is not aware about the same that an escrow is being opened for him in the hedging transaction. So we responded to the department in such a way, stating that first of all, we are not aware about the hedging, how the brokers work at the back end. I have only taken an hedging contract, and that hedging contract I have paid certain amount for hedging, and that is my expenditure. First of all, it is not my income. After hedging of my forex transaction or any other situation, I am not getting any taxable income. Second, the account, even if I am aware about the account, but the account does not contain any credit other than MTM credits, which is not taxable in India. Any credit which you say that the same is taxable here, meaning thereby that these accounts do not have any statutorily requirement to be disclosed in the ITR. अब सर एक कंपनी है जिसके मान लीजिए उसमें साल में अगर उसने 10 लाख बार जो है हेजिंग करी है तो उसके 10 लाख एस्क्रो अकाउंट है, तो हम सबकी डिटेल थोड़ी दे देंगे. So you need to try and convince the officer with these kinds of argument कि सर ठीक है मैंने नहीं किए, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं थे, और अगर मुझे पता भी होते तो यहाँ पे where is the tax evasion, where I have evaded the tax. If I have not evaded the tax, I am not supposed to disclose these accounts. But my suggestion is, if there are 1 or 2 accounts, you disclose it in the return of income, because it is very difficult to convince an income tax officer or a AC or DC on this ground, because in this hedging transaction the volume of transaction is very high, because every day there is an MTM for the entire hedging done. So it is always better to disclose it. But if you have not disclosed it or there are too many accounts, there is no statutorily requirement to disclose these accounts. So that's my personal view for the hedging accounts. और आपको practically बता रहा हूँ, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे. They will not do anything in those things. आप अपना आराम से जो है इसको अपना रिप्लाई, लीगल रिप्लाई दो, और मैटर विल बी ओवर. अगर मान लीजिए कुछ लगाते भी है, you go in appeal, the authority will appellate authority is giving the 100% relief in these cases. So don't worry about those hedging accounts. ठीक है अमन जी? Sure, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was very helpful. Yeah. So that's it. हाँ जी सर. Any other question, Pramod ji? So can I move further? Any questions? We can proceed further, sir. Okay. So now we are there. I think one more question have come. Yes, मुस्कान जी बताइए. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी, बताएं. सर हमारे क्लाइंट को ना टेक्निकल सर्विसेज लेनी है दुबई से, बट हमारे आर्टिकल में दुबई और इंडिया के उसमें हमारे मैडम इंटरनेशनल टैक्स की क्लास नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन असेट्स. ओके, we'll discuss it later. Okay, sorry sir. Okay. So what I said is that even if it is disclosed in the ITR, that does not guarantee you that there is no penalty, there is no penal provisions or prosecutions applicable under the Black Money Act. So what we need to show is the source of the investment, source of the fund that we have done it or invested. In 2020, they have amended the law.
सो पहले क्या होता था, पहले जैसे ही ब्लैक मनी का नोटिस आया, that moment I become non-resident. That year, if I am non-resident, then the proceedings will not be applicable on me. So that's many people are doing like this. The moment they receive a notice under the Black Money Act, they go out of India and they become non-resident in that year, and then they claim that we are non-resident, hence the Black Money Act provisions are not applicable on us. So now what they have said is that even if a person is a non-resident today, when the notice is being issued, but it pertains to a period when the person is a resident. So नीरव मोदी जी की undisclosed foreign assets पता चली, और वो assets उन्होंने 2012, 2013, 2014 में खरीदी थी, और नोटिस उनको जो है 2023 में आज इश्यू हो रहा है. Today he is a non-resident in India. He do not stay in India. So he is a non-resident. But it pertains to a period of 2012, 2013, 2014, when he acquired certain assets outside India, and the notice pertains to those years of acquisition, and at those years he is the resident in India. So the law have been amended in 2019, effective from 1st of April 2020, where it was held that even if the person is a non-resident today, but at the time of making of the transaction, at the time of credit of the amount in the bank account, if the person is a resident at that time, still Black Money Act can be applicable on the person. So उसके ऊपर वो apply होगा, and if it is an undisclosed, so consequential penal provisions will apply as it is. तो वो आपको as it is चलेंगे. Now, in many cases, what I have seen, the information which is being supplied to the department is itself wrong. So मेरे केस में क्या हुआ गोयल साहब, a same information is being given to the department 8 times. So एक हमारा फॉरेन में मेरा बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट के अंदर हमारा कुछ बैलेंस था, और वो बैंक अकाउंट मैंने मेरी रिटर्न में डिस्क्लोज भी कर रखा था. जब उन्होंने सिस्टम में इंफॉर्मेशन अपडेट करी, तो आई थिंक देयर वाज सम मिस्टेक और समथिंग इज देयर, द सेम इंफॉर्मेशन इज अपलोडेड 8 टाइम्स. सो मेरा जो $1,00,000 का बैलेंस था, या जो $1,00,000 का अमाउंट उसमें क्रेडिट हुआ था, वो $8,00,000 दिखाई दे रहा था. द इंफॉर्मेशन विच हैव कम इज फॉर $8,00,000. So what to do in those cases? So when I went to the officer and I said, sir, देखिए सर, मेरा $1,00,000 का ही है, बाकी $7,00,000 do not belong to me. The officer will say, no, Mr. Gupta, I don't know. I have an information that your balance is $8,00,000, so you have to show me and give me a reconciliation how this have come. And I don't have any information. So what you should do in those cases is that always put a original statement or a certificate from the bank stating that with this particular bank I have only this bank account, or I have 1 or 2 or 3 bank account, and the aggregate balance as on 31st December or 31st March, whatever the case may be, on that account, on that bank accounts, or the value of those assets is this. And the same have been properly disclosed in the ITR. Many officers do not still rely on these certificates. Then you have to file an affidavit of the person regarding the same, that whatever information that he have given is true and correct, and he have only one bank account and the remaining entries do not belong to him, or it is merely a repetition or a duplication of the entry. It happens many times. So इसके ऊपर आप प्रॉपरली इसको रिप्लाई करें, और इसको रिप्लाई करके जो है यू कैन रिप्रेजेंट थ्रू एन एफिडेविट. नेक्स्ट सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है सर. सर, इफ एनी पर्सन हैव इन्वेस्टेड मनी इन अ PE fund, private equity fund,
or the person have invested in a international mutual fund, फॉरेन का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो विकास जी एक बार बताइए सर इसकी टैक्सेबिलिटी कब होगी? मैंने $1,00,000 इन्वेस्ट किया और 2011 में इन्वेस्ट किया था और 31 दिसंबर 2018 में उसकी वैल्यू जो है वो $1,00,000 से बढ़कर $25,00,000 होगी, एंड इनकम टैक्स ऑफिसर इज ऑफ द इंफॉर्मेशन that the person is having a mutual fund in a foreign country worth $25 lakh. Is there and assuming that $1 lakh whatever have been paid in the beginning is a tax paid money, it's a disclosed source, so can it directs or it can there be any tax liability on this particular information? एज पर इंडियन लॉ तो जब वो सेल करेगा तभी टैक्स लायबिलिटी राइज होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर, because it is the capital asset, and in case of a capital asset the liability to pay tax will come only and only when there is a transfer, and transfer is sale of the units that he hold for the mutual fund and others. So in that case I do not have a single rupee liability where my mutual fund investment have grown from $1 lakh to $25 lakh. But what happened is every mutual fund or every PE fund is under an obligation under the US FATCA law to declare the market value of the fund as on 31st December of the year to US government, and US government sends all the forms where it belongs to the Indian passport holder. So the mutual fund sends this information to the US government for each beneficiary wise. So अब हमारे केस में क्या हुआ सर? When it comes to us, they said आपका तो $25 लाख का म्यूचुअल फंड है, प्रूव करोगे $25 लाख आपने कहां से कमाए, क्या करोगे सर? सर क्या करेंगे सर? हमने कहा सर $25 लाख कमाए कहां, अभी तो कुछ आया ही नहीं हाथ में. So in those cases also it is very important that you need to tell to the officer. सर वो तो कहेंगे कि हमें तो $25 लाख पे टैक्स चाहिए, 25 में से $1 लाख माइनस कर दो, $24 लाख पे हमें टैक्स दे दो. बट आंसर इज नो. We have to see the transaction and we have to tell to the officer that yes, I have invested in a mutual fund, or I have invested in a PE fund, or I have invested in any fund overseas, but there is no dividend distribution during this period, there is no bonus distribution during the period, and there is no income which have been taxable in the hands of the SSC, whether it is capital gain or otherwise, because there is no transfer happened till from the date of purchase till date. तो जब तक अभी तक आया नहीं है तो आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती. तो ये एक अगर इसमें उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न में नहीं डिक्लेयर की है, उस केस में भी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही. जब उसने इनिशियली नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स पे कोई पेनल्टी स्टेट में है कि हाँ जी डिस्क्लोज पेनल्टी सर कोई पेनल्टी नहीं है. सिर्फ हमारे लॉ में ब्लैक मनी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करी तो आपका वो ब्लैक मनी एक्ट में आप लायबल है कि आपके केस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे. फिर लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर पेनल्टी और टैक्स हम तब लगाएंगे जब वो अमाउंट या जो वो एसेट जो है वो अनडिस्क्लोज सोर्सेज से खरीदी गई. तो मैंने अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं भी करी, कोई बात नहीं, आप मेरा ब्लैक मनी एक्ट पे केस खोल लो, बट उसके बाद मेरे पे पेनल्टी और इंटरेस्ट तभी लगा सकते हो जब उसका मैंने जो सोर्स है जिससे वो मैंने काम शुरू किया, उसकी शेयर कैपिटल, म्यूचुअल फंड या किसी और फंड की इन्वेस्टमेंट, घर खरीदा तो घर खरीदने के पैसे, अगर वो मेरे सारे डिस्क्लोज्ड सोर्सेज से हैं, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट लेवी एनीथिंग ऑन मी. और कोई कहता है मैं पेनल्टी लगा दूंगा, तो उसको बोला बताओ भाई कौन से सेक्शन में लगाओगे, पेनल्टी किसी सेक्शन में तो लगाओगे ना. कहाँ लिखा है? अगर मेरा सब कुछ डिस्क्लोज सोर्सेज से है
बट मैं किसी कारणवश इनकम टैक्स रिटर्न में वो भरना भूल गया या मेरे को किसी ने एडवाइस नहीं किया, दैट डज नॉट मीन कि मेरे को वो मेरा ब्लैक मनी हो गया। इनकम टैक्स के अलावा कहीं और भी डिस्क्लोज करना है इस चीज को? नहीं, और कहीं नहीं डिस्क्लोज करना सर, इनकम टैक्स के आईटीआर में ही डिस्क्लोज करना है बस, nowhere else you are required to disclose and that too आरबीआई। हाँ जी फेमा और आरबीआई के अंडर कहीं इसको डिस्क्लोज नहीं करना सर। फेमा और आरबीआई के अंदर इसलिए आपको डिस्क्लोज नहीं करना क्योंकि फेमा के अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका एलआरएस स्कीम में जाता है, तो एलआरएस में गया होगा तो आपको इसमें आगे कोई डिस्क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका पैसा एलआरएस के बाहर गया है तो किसी और स्कीम में गया होगा तो उसमें आपने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया होगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव नथिंग टू डू विद द नॉन कंप्लायंसेस मेड फॉर अदर एक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा वो एक चिट्ठी लिख सकते हैं आरबीआई को कहते हुए कि देखिए जी ये इन्होंने पैसा भेजा जिसकी आपने एडवोकेट डिस्क्लोजर इन्होंने नहीं की तो आप देख लो, बट ऐसा नॉर्मली इनकम टैक्स ऑफिसर्स नहीं करते। ठीक है सर। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है सर। चले सर आगे चले। सो मैंने आपको नेक्स्ट केस जो बताया वो बताया म्यूचुअल फंड या पीई फंड्स का। सो प्लीज टेक केयर because what government of India or what income tax department is receiving the information is the NAV of the fund, which is market value of the fund, not the cost price. So normally जितने भी PE fund के cases हमारे पास आए या हमने हैंडल करे उसके अंदर जो मेजरली डिसरिगार्ड था वो था कि जो वैल्यू उन्होंने दी हमें, the value which have been given by the fund to the government of India through US is the market value. However, the same is not taxable in India because there is no capital gain. However, if there is any distribution of profit by way of a dividend or by way of a buyback of units or by way of any other way which is regarded as transfer, तो उसके ऊपर टैक्स देना मेरे लिए मैंडेटरी है। So the tax has to be paid on that particular item because the same is taxable in India. Otherwise, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सिंपल जो है what you have to do is you just need to reply it and matter is over. So he cannot do any problem, he cannot do any addition or penalty in this particular case. चले सर अब आगे चले। इज इट ओके? बोल साहब आगे चले। कंटिन्यू सर नेक्स्ट एक जो पूछा कि भाई अगर नहीं डिस्क्लोज किया तो एओ कितना ऐड करेगा? एक लाख करेगा या 25 लाख करेगा? सर एक लाख करेगा या 25 लाख करेगा ऐसा कोई फिगर नहीं है सर। इसमें आपको जो पेनल्टी है ब्लैक मनी एक्ट में 3 तरह की पेनल्टीज प्रिस्क्राइब की गई है। 1 लाख रुपए की एक जनरल पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है। इसके अलावा आपको जो है 5 लाख रुपीस की पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है और एक आपको अगर विलफुल डिफॉल्टर हो तो 25 लाख रुपीस की पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है। एक जगह जो है आपको 6 महीने की जेल है अगर आप इनोसेंटली कोई गलत काम करते हो, और दूसरी जगह आपको 7 इयर्स की जेल है जिसमें अगर आप विलफुली आपने जो है अनडिस्क्लोज्ड एसेट ट्रांसफर करी है। तो वो ब्लैक मनी एक्ट की सारी अपनी अलग पेनल्टीज दी गई हैं, बट एज सच कोई स्टैंडर्ड पेनल्टी नहीं है जो एक बार में आपको लग सकती है। सर पेनल्टीज जो आप कह रहे हो ब्लैक मनी एक्ट इनकम टैक्स में भी मतलब अलग पेनल्टीज है, कैसे ब्लैक मनी एक्ट है कैसे? अब नॉर्मली क्या लिखा गया है कि अगर इनकम टैक्स में आपकी असेसमेंट हो चुकी है और वहां पे अगर आप टैक्स और पेनल्टी पे कर चुके हो, सो देन ब्लैक मनी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन यू। ओके जी। सो देन इन ब्लैक मनी एक्ट इट इज डीम्ड टू बी ए डिस्क्लोज्ड इनकम। और इसी तरह से वाइस वर्सा ब्लैक मनी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर ब्लैक मनी एक्ट में आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है और ब्लैक मनी एक्ट में आपने वो पेनल्टी और जो टैक्स है वो दे दिया है, तो उस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स वाले आपसे जो है वो पेनल्टी और टैक्स नहीं ले सकते।
तो एक ही जगह पे पे होगा सर, ये नहीं है कि हर एक्ट पे खोल के अलग अलग पे करेंगे. That has to be paid at one place only. ठीक है सर. राइट सर. राइट. Can I move further, sir? Yes sir. Yes sir. So the next problem for which we are receiving lot of notices are ESOPs. ESOPs में क्या है, अभी अरुण जी का बेटा यूएस जा रहा है, वो वहीं पे काम करेगा, वहां पे काम करके इसको ESOP मिले. ESOP मिलते ही उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बना के वापिस आ गया, and he is staying here. Now these ESOPs are not in his individual hands. Generally, a foreign ESOPs are being given through a depository, and those shares are lying with the depository. However, the holder of the person or the beneficial owner of the person is that individual only. अब वो जब मिलते हैं तो वो हमारे सैलरी इनकम में टैक्सेबल होते हैं, और जब हम उसको बेचते हैं तो जो भी सैलरी के लिए परक्विजिट वैल्यू हमने ली, 10 रुपए दिए थे शेयर के, 100 रुपए का शेयर था, हमने 100 रुपए पे परचेज वैल्यू होगी, और जब मैंने उसको बेचा तो उसमें जो भी मैंने बेचा उसके ऊपर जो भी डिफरेंस होगा, दैट विल बी अ कैपिटल गेन, either long term or a short term, whatever the case may be. So that particular income is liable to be taxed here. अब हमारे पास क्या हुआ, 3 केसेस में इंफॉर्मेशन आई, is such and such person is holding these much shares in USA. When we investigated the matter ourselves, then we found that these shares are nothing but ESOPs given to these people during their employment contract. So those cases you have to be very careful to see that when at the day the shares is being allotted to the person, whether the same has been included in the income, salary income of the employee or not. If answer is yes, then no need to worry. Just straightforwardly tell the officer that yes, I am holding these shares. Whether I am disclosing these shares in the return of income or not, that doesn't matter. But the consideration paid for purchase of the share is out of salary money. And if there is any capital gain on sale of those shares, if it is sold, that have also been paid or discharged by the SSC. Hence, proceedings under Black Money Act cannot be reopened against that SSC. Is it clear, sir? राजेश भाई क्लियर है? आप म्यूट पे हो, सुनाई नहीं दे रहा. So ESOPs is also a big pain for many people, because ESOPs are shares, and shares are financial assets which have some value. Ideally, all ESOPs needs to be disclosed in the ITR of the. तो अरुण जी, आपके बेटे को जब ESOP मिलेंगे तो उनकी रिटर्न में डिस्क्लोज कर देना आप. रिटर्न तो आप ही ने भरनी है, तो उसका जो है that ESOPs, if any, specifically for those people who are working for MNCs, you should categorically ask them. सर एक है ना क्वेश्चनर बना लो कि मुझे क्या क्या चीजें पूछनी है, उनसे पूछ लो कि किसी फॉरेन कंपनी के ESOPs तो नहीं मिले, कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स तो हेल्ड नहीं करते, अगर करते हैं तो then these needs to be disclosed appropriately. अब मैंने नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है सर. अगेन मैं पूछूंगा कि जब शेयर एक्वायर किए थे तो क्या नोन से था, अननोन सोर्सेज से था? जी नोन से था, टैक्स पे किया था. क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई डिविडेंड या ड्यूरिंग द पीरियड कोई डिविडेंड या कुछ और हुआ, इससे एग्रीगेशन कोई इनकम जनरेट हुई? कोई जनरेट नहीं हुई. कोई बात नहीं भी डिस्क्लोज किए तो कुछ नहीं हो सकता. ही विल नॉट लेवी यू एनी काइंड ऑफ अ पेनल्टी इन दिस केस, क्योंकि आपने जो है जो एसेट्स जो एक्वायर करी है वो एसेट्स हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ द disclosed sources. ठीक है सर? Any issue anybody have in this ESOPs? Because ESOPs is also a big cases are coming because of these shares. So the next type of notices is being received by people which is on account of bank signatory. So मेरी एक कंपनी है, let's say अभी दुबई में है,
और उस दुबई का बैंक अकाउंट खोल दिया और उसका सिग्नेटरी राजेश जी आपको बना दिया, and you are only an employee of the company, you are not the owner of the company. But who is the signatory? Rajesh bhai, you are the signatory. And in my foreign assets column, there is a particular point where I have to disclose all the bank accounts on which I am the signatory, but I am not the beneficial owner. The beneficial owner is the company जिसका वो अकाउंट है, और वो मैंने नहीं किया. As an SSC, I have not given the declaration in the ITR. कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं दिया, no problem. That again, this particular transaction, I don't foresee that I have made any money out of it. So nothing is taxable, but yes, there is an harassment because ideally I should disclose all the bank accounts where I am the signatory. Whether I am the beneficial owner of the same or not, that doesn't matter. But the same needs to be disclosed appropriately in the return of income. I hope I am clear on this. Yes, sir. Any questions till now? अरुण जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी नहीं है, आप प्लीज. चलो सर, कंटिन्यू करते हैं. चलो सर आगे चलते हैं. सर अब नेक्स्ट उसके बाद जो नोटिसेस जो मेनली आ रहे हैं, they are asking you about specifically details about the bank accounts which are held by the SSC in his own name or in the name of his family members. तो उन बैंक अकाउंटों में जिसमें आप खुद सिग्नेटरी हो और आपके नाम पे आप बेनिफिशियल हो या आपकी फैमिली बेनिफिशियल ओनर है, so those things are also required to be disclosed in the ITR. But if the same is not disclosed, तो आपको अगेन उन बैंक अकाउंट्स को मंगवाओ, डिटेल एनालिसिस करो कि from where the money is coming. So वो जहां से भी पैसा आ रहा है उस पैसे उसका अगर वो डिस्क्लोज सोर्स है तो आप कोई दिक्कत नहीं है. अगर अनडिस्क्लोज सोर्स है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पेनलाइज कर सकता है. Next, which is most important, sir. So what happened is many SSCs in India are the beneficiaries of the insurance policies. So they have taken a global insurance policy which will fetch them some amount of money either at the death of the person or even before the death of the person on fulfillment of certain conditions. So all those policies are there where you are the beneficial owner. तो अगर आप लोग beneficial owner हो, आपका SSC beneficial owner है, so the same needs to be disclosed in the ITR itself that you are a beneficial owner of an insurance policy which is being taken overseas from that source. So that is also needs to be properly distinguished and disclosed in the financials. अब सर हमारे साथ एक बड़ा पेक्यूलियर सिचुएशन हुई. हमारा एक एसएससी था सर, उसका नोटिस आया और उसके नाम पे जो है वो 50 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी एंड ही इज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द सेम. पता ही नहीं था उसे बेचारे को. अब गोयल साहब सोच में पड़ गए, यार ऐसा कैसे हो गया कि 50 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी और उस एसएससी को पता ही नहीं है. सर हुआ क्या, सर उसके फादर इन लॉ जो थे वो यूएस सिटीजन थे एंड हिज फादर इन लॉ हैव बॉट दिस पॉलिसी फॉर हिज डॉटर एंड सन इन लॉ. सो और उसकी जो डॉटर थी वो भी यूएस सिटीजन थी, जो सन इन लॉ था वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर था. सो जो इंफॉर्मेशन आई वो सिर्फ सन इन लॉ की आई, सॉरी,
ना फादर की आई और ना ही डॉटर की आई, मतलब हस्बैंड की इंफॉर्मेशन आ गई, वाइफ की इंफॉर्मेशन आई नहीं, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग द इंडियन पासपोर्ट. सो देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आस्क अस कि आप ये 5 करोड़ रुपए की, सॉरी 25 करोड़ रुपए की जो आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हो, इसका प्रीमियम आप कौन देता है और कहां से देता है. क्योंकि अगर प्रीमियम जो पेइंग है अगर वो डिस्क्लोज है तो आपका जो इंश्योरेंस का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो गया. बट अगर आपका प्रिंसिपल इटसेल्फ इज एन अनडिस्क्लोज्ड मनी, सो इन दैट केस यू आर लायबल फॉर ब्लैक मनी एक्ट के अंदर पेनल्टी प्रोविजंस एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल. So in that case, in that particular case, we found that his father-in-law is paying the premium, and then we say to the bank, to the income tax department, that father-in-law is paying premium, and whatever he is making payment for the premium is a gift to the SSC, and the gift from a father-in-law to a son-in-law is not covered under any of the provisions of Section 56. Hence, this is exempt, and this should be treated as my own income, which is being used for payment of the insurance premium for this 25 crore policy. This 25 appears to be very less for all of you, but it is the case of financial year 2010-2011. So that time the 25 crore is a big amount. So that's how these policies have come. और ये नॉर्मल कोर्स में अब ये इंफॉर्मेशन और ये डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है. सो विकास जी, अगर आपने कोई पॉलिसियां ले रखी हैं तो या तो बंद करा दो उनको, नहीं तो डिस्क्लोज करना चालू कर दो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम पे. मेरी शादी तो बठिंडा हुई है जी, यूएसए में नहीं हुई. कोई बात नहीं सर, तो ऐसा कोई चांस नहीं है. ठीक है सर, कोई बात नहीं, किसी एसएससी की हो तो उसको ये समझा देना ये बात. ठीक है. तो इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ रहा है और उससे भी नोटिसेस दे आर आस्किंग फॉर इट. ओके सर, कैन आई मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक? और इंफॉर्मेशन हमें उसमें देनी है. या कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर. अभी तक एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर, प्लीज कंटिन्यू. नहीं, कंटिन्यू सर, वी कैन मूव सर. चलिए सर. सर इसके बाद जो अगले टाइप के नोटिसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं शेयर्स के रिलेटेड. तो शेयर्स विद द डिपॉजिटरीज, तो बहुत सारे फॉरेन डिपॉजिटरीज हैं जिनके थ्रू लोग ट्रेडिंग करते हैं, where shares are actually being held by a third party depository, and the beneficial owner of the shares are Indian citizens or Indian passport holders. तो उस केस में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो शेयर्स हमारे को मिले हैं ये शेयर्स का सोर्स क्या है, whether it have been acquired from a proper source or not. If it is acquired from a proper source, then matter is over. Otherwise, there may be a consequential provisions applicable on the penal and prosecution provisions will be applicable if the same has not been disclosed properly in the return of income, and the same has not been what I say, they have been disclosed in the proper ITR, or the money have been paid from a known and legal source. तो अगर ये है तो आप बच जाओगे. अदरवाइज ये शेयर्स का डेटा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ रहा. लास्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट इज द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट. सो हमारे जो पैनामा लीग्स वाले जितने केसेस हैं या आजकल बीवीआई और केमन आइलैंड की इंफॉर्मेशन आ रही है जिसमें ट्रस्ट का पूरा डेटा आ रहा है, that a third party trust is being created and some portion of money is being infused in that trust, and to the extent of that money this person will become the beneficiary of the trust. तो उस ट्रस्ट का इनके पास टोटल इनकॉर्पोरेशन से लेकर आज तक का पूरा डेटा आ रहा है कि भाई ये बिजनेस ट्रस्ट बनी हुई है, ये पी फंड के ट्रस्ट बनी हुई है और इन ट्रस्टों में पैसा आया है,
बट इसका बेनिफिशियल ओनर ये है, और जो पैसा आया है वो बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट से शायद आया है और शायद नहीं आया। अगर पैसा उसके ओनर के अकाउंट से आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो नॉन सोर्स हो गया। और अगर वो पैसा प्राइवेटली आया है तो उस पैसे के ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा? इन दैट केस we have to declare it in the Black Money Act, and we have to pay tax and consequential penalty also on these particular type of transactions. हाँ जी सर, any question sir? Sir, disclosure in ITR बता दें please कि how to disclose these foreign assets in the ITR return. नहीं बता तो दिया सर आपको। अब ITR के अंदर एक FA शेड्यूल है, उस FA शेड्यूल इज फॉरेन एसेट। पहली बात मैंने आपको पहले भी बताई, अब दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स आर लायबल टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। A not ordinary resident or a non-resident is not liable to give the information about the foreign assets and foreign sources. अब इसमें आपको मेनली 5 तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। पहली इंफॉर्मेशन आपको देनी है all the foreign assets including the immovable property held in your name, held in the name of the assessee. तो जो भी मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, जो भी मेरी कोई और एसेट है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल मुझे 1 में देनी है। दूसरा मुझे देना है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट इफ आई हैव अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मैंने ट्रस्ट में डोनेशन दे दी, पैसा लगा दिया और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मेरे नाम पे, या मैंने कहीं और कुछ खरीदा जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरे नाम पे है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चाहे मैंने दिया या नहीं दिया बट उसका बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, बिकॉज द बेनिफिट विल कम टू मी एज सच। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कैटेगरी 2 में उन्हें देनी है। कैटेगरी 3 में मेरे को अपने खुद के बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल देनी है। कैटेगरी 4 में मुझे उन बैंक अकाउंटों की डिटेल देनी है जिसमें मैं सिग्नेटरी हूं बट द अकाउंट्स डू नॉट बिलोंग टू मी, they belong to a third party, maybe the employer, maybe somebody else. And 5th में मुझे देना है if there is any other foreign assets which is not mentioned above needs to be reported in the last column, whereby they say that okay, I have these foreign assets and I do not find an appropriate column above, hence I am filing these information as an under the residual head. तो उसके अंदर जो है रेजिडुअल हेड में मुझे ये इंफॉर्मेशन वहां पे देनी है। हर साल मुझे इंफॉर्मेशन देनी है और हर साल मेरे जो बैलेंसेस होंगे वो 31 मार्च के बैलेंसेस मुझे देने हैं। दैट इज व्हाट आई नीड टू सबमिट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो उसके अंदर मुझे ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हाँ जी अरुण जी, और कुछ डिटेल में और कुछ है? सर जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं उनको भी नोटिस आ रहे हैं? सर क्रिप्टो वालों को भी नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज पे इन्होंने क्या किया है, 1.5 साल पहले उनकी सबकी सर्च करी थी गब्बर और ये जो जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, इन सब की जो सर्च करने के बाद इनके पास जितना भी डेटा आया है उस पूरे डेटा को इन्होंने एनालाइज करके सभी लोगों को नोटिस भेजे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, अगर वो इंडिया वाले एक्सचेंज है तो उनको तो हमने INR में पेमेंट की है, जो बाहर के एक्सचेंजेस हैं उनको हमने डॉलर्स में और दिरहम्स में पेमेंट कर दी, और बहुत सारे केसेस में पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आए। मेरे इंडिया के क्रेडिट कार्ड से नहीं गए, मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट से नहीं गए, लेकिन पैसे गए हैं। सो कहाँ से पैसे आए ये प्रूव करना हमारे लिए जरूरी है, सोर्स प्रूव करना जरूरी है। अदरवाइज क्रिप्टो की जितनी एसेट्स हैं या क्रिप्टो से आपने जितना भी पैसे से जो भी आपने बनाया है, कमाया है, वो सारा का सारा सब्जेक्ट टू ब्लैक मनी एक्ट है। तो वो सब आपको जो है ब्लैक मनी एक्ट में जो है वो लग जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्रिप्टो में ओरिजिनल पैसे कहाँ से लगाए थे उसका सोर्स मालूम होना बहुत जरूरी है।
सर अगर मेंबर्स की इसके ऊपर कोई क्वेरी अभी खास नहीं है तो काइंडली आप थोड़ा सा टीसीएस का जो थोड़े से चेंजेस हुए हैं वो थोड़ा सा बता सकते हैं 5-7 मिनट में? सर उसमें बता दो जरा। पहले सर मैं मुस्कान जी की क्वेरी सॉल्व करूंगा, फिर मैं पहले मुस्कान जी की। वो सेकंडली मैं जानना चाहता था कि भाई कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिगार्डिंग अगर किसी की क्वेरी हो तो वो भी प्लीज टेक अप कर ले। तो पहले मैं मुस्कान जी अब आप पूछिए पहले, इज देयर एनी अदर क्वेरी ऑन ब्लैक मनी एक्ट और फॉरेन एसेट्स? सो लेट अस डील विद दैट, देन आई विल गो टू मुस्कान जी फर्स्ट। हाँ जी, अरविंदर जी। सर हेलो। यस सर। सर मेरी क्वेरी ये है कि एक एनआरआई की रिटर्न भरने के बाद जो एड्रेस होता है वो इंडिया का एड्रेस दे सकते हैं? दोबारा बोलो सर। सर एनआरआई की रिटर्न भरने के टाइम पे जो उसमें आईटीआर के ऊपर एड्रेस देना है वो इंडियन एड्रेस देना है या फॉरेन का एड्रेस देना सर? जोन सा आपको मन करे और अच्छा लगे। Preferably you give it an foreign address, but many times the individual do not have a permanent foreign address, so he gives his Indian address. That is okay, no problem at all. Okay sir, thank you जी। Yes sir, any other question sir? Else I'll go to Muskan ji. मुस्कान जी लाइन पर हो आप? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, आप अपनी हाँ क्वेरी जी बताइए आप प्लीज। सर एक ना हमने हमारे क्लाइंट ने टेक्निकल सर्विसेज लेनी है दुबई से, तो आर्टिकल जो है दुबई का उसके साथ एफटीएस के ऊपर कुछ भी नहीं। You have to make payment for FTS, मतलब either you are taking service UAE or you are giving services. Sir, we are receiving services in India from Dubai. So meaning thereby you are liable to pay money to UAE people. Yes, sir. Then we have to deduct tax. According to Indian taxation under section 115A, we have to deduct 20%. Correct. But if we want to take the DTAA benefit, there is no article on FTS or in Dubai and India. बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर इसमें कुछ हमने केस स्टडीज पढ़ी हैं कि अगर कोई आर्टिकल नहीं है एफटीएस के ऊपर, देन उसके ऊपर वो टैक्स नहीं लगेगा। वी कैन टेक इट एज बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द अदर कंपनी, बट एज सर हमने अपने क्लाइंट को दिया है, बट इट इज आई थिंक लिटिगेशनल मैटर, तो हमें मतलब कोई लिटिगेशन नहीं है। नाउ द ITAT have given very clear judgment in case of UAE, in case of Philippines, and in case of Thailand, where there is no article on FTS, then it has to be governed by the other income or the business income under Article 7. And because Article 7, generally these companies do not have any permanent establishment in India, then it is not taxable in India. Earlier there was a litigation, but now the tribunal have given a favorable judgment and department have not gone in appeal against the same in the High Court. ओके सर, तो वो बिना टीडीएस डिडक्ट करे पेमेंट कर सकते हैं? करना ही है, ठीक है सर। ओके, क्योंकि लेकिन टीआरसी ले लेना प्लीज आप। हाँ जी सर, ठीक है। प्लीज ऑब्टेन द टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, टैक्सेस जो भी चाहिए वो सारे, ठीक है। जो भी 10F फॉर्म, टीआरसी, जो भी चीज चाहिए वो वाला कंप्लायंस आप पूरा कर लेना, बिकॉज उसके अंदर जो है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सारी चीजें आपकी पूरी हैं। ठीक है सर। हाँ, वो बिजनेस प्रॉफिट्स में अगर हम लेंगे उसका बेनिफिट, तो देन वी कैन टेक ना अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, any other query? Now let me move to one very important amendment which have been effective on 1st of July 2023 with respect to TCS. अरुण जी, मैं एक एंट्री ले रहा हूं जिसको सब लोग मतलब everybody was worried about it. हाँ जी। With effect from 1st of July 2023, whenever you are making a foreign remittance and that foreign remittance is being made for LRS, and that LRS, the purpose code is towards medical,
The purpose code is towards education, and the purpose code is any other thing other than medical and education. So medical and education, it was as it is, whatever it was earlier, 5% TCS, that TCS is still applicable. But for all other purposes, if the money is going abroad under the LRS scheme, the rate of TCS to be collected by the bank or the person who is remitting money abroad, whether it is Western Union or any other intermediary, has to collect a 20% TCS for all the transactions happened on or after 1st of July 2023, irrespective of the amount spent. तो किसी भी तरह का कोई भी आपने अमाउंट भरा है, कुछ भी किया है, उसके ऊपर आपका जो है what is you have to do is you have to pay a TCS at the rate of 20%. So ये 20% का आपको देना पड़ेगा for an LRS scheme. Then there was an hue and cry with respect to the transactions made abroad by the person through the credit cards. क्योंकि जब आप सब लोग घूमने आएंगे यूएई, दुबई या अबू धाबी या घूमने जाएंगे लंदन, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप कराते हो, बिकॉज ऑल क्रेडिट कार्ड्स, ऑल डेबिट कार्ड्स nowadays are international cards, and the money what you are withdrawing from these international cards are allowed under LRS only. So now the government of India have also come up with a notification or a clarification stating that even if the person on or after 1st of July 2023 spending money through the credit cards or debit cards or any other cards, including a prepaid card, then on that amount also, on that spending also, additional TCS of 20% is levied, provided it exceeds, I think 7 lakh rupees or 7.5 lakh rupees limit they have proposed. So on the credit card also, आपको ये 20% जो है वो ओवरऑल आपकी क्रेडिट लिमिट में से जितना भी आपने पैसा खर्चा किया उसमें आपका ये 20% काट लेंगे. They have to collect this TCS. Next. सर इसमें अब 20% में जो 7 लाख की लिमिट भी खत्म कर दी, तो क्रेडिट कार्ड में फिर वो लिमिट तो नहीं मतलब एप्लीकेबल नहीं. क्रेडिट कार्ड के लिए सर उन्होंने नोटिफिकेशन दी है. क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है, 7 लाख की है या 7.5 लाख की है, कि अप टू दैट अमाउंट क्रेडिट कार्ड पे कोई टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा. उसके बियॉन्ड अगर जाता है तो टीसीएस कलेक्ट होगा पर बैंक, पर कार्ड, पर एसएससी बेसिकली. अगर फॉरेक्स कार्ड है सर, फॉरेक्स कार्ड का तो जब आप फॉरेक्स कार्ड पे डलवाओगे पैसे पहली बार, तभी वो 20% काट लेंगे, बिकॉज फॉरेक्स कार्ड इज डीम्ड टू बी अ रेमिटेंस मेड आउटसाइड इंडिया. तो उसमें तो फॉरेक्स कार्ड, आपने $10,000 का फॉरेक्स कार्ड ले लिया, आपके $10,000 पे 20% कलेक्ट होगा, बाद में आपके उसमें 9,000 वापस ले आए, मतलब आपने खर्चा ही नहीं हुआ, तो आपके 9,000 वापस आपके क्रेडिट कर देंगे, लेकिन वो 20% नहीं मिलेगा उसका. तो फॉरेक्स कार्ड में 1 जुलाई से पहले तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो 1 जुलाई से पहले अगर करते हैं तो फिर वो टीसीएस नहीं है. कर लो, आपने जाना है, मुझे मालूम है, तो अभी खरीद लो. गंभीर साहब, लिमिट जो है वो पर बैंक है, पर कार्ड नहीं है. सो अगर मेरे एक बैंक में मेरे पास 5 कार्ड्स हैं, बिकॉज आई एम हैविंग अ सिंगल कस्टमर आईडी, तो बैंक उसको एग्रीगेट कर देगा. बट अगर मेरे पास 4 बैंकों के कार्ड हैं, तो चारों बैंकों को थोड़ी पता है कि दूसरे ने मेरे से कितना, दूसरे कार्ड से कितना स्पेंड किया है. तो उस लिमिट के अंदर आप दूसरे कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो टू दैट एक्सटेंट आपका टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा. तो ये है. ठीक है अरुण जी, आप अभी ले लो 1 जनवरी से पहले, 1 जुलाई से पहले तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा. ठीक है. नाउ देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस व्हिच हैव कम अप बिकॉज ऑफ दिस. सर मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो क्या हमें भी टीसीएस देना पड़ेगा? सर वी आर मेकिंग अ पेमेंट
फॉर ओडीआई अंडर द ओडीआई रूल्स क्या हमें टीसीएस लगेगा? सर सम नॉन रेजिडेंट एनआरआई इज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम इंडिया, whether that is also liable for a TCS under 20%, etc., etc. So all these answer is no, because whatever import you are doing, import of goods or import of services, that you are doing it under the current account transaction, not under LRS. तो इसलिए आपको उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई टीसीएस देने की आवश्यकता नहीं है. Similarly, for ODI, that is under ODI rule, which is the capital account transaction, not under LRS, so no requirement of any TCS. A non-resident, an NRI taking out money from India is under a $1 million scheme, not under the LRS provisions. So hence on that person also there is no need to collect any 20% TCS on or after 1st of July 2023. तो उसके ऊपर भी किसी भी तरह का कोई TCS का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. सो ये आपको ये TCS वाला जो नया प्रोविजन 1 तारीख से आ रहा है, अगले 1 जुलाई से, सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस. सर एनआरई का चाहे एनआरओ अकाउंट हो उसमें से भी नहीं लगेगा? एनआरओ या एनआरई अकाउंट से लेके जा रहा है बाहर? हाँ सर, एनआरई के ऊपर है ना एलआरएस लगती नहीं है. एलआरएस स्कीम जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रेजिडेंट्स. तो नॉन रेजिडेंट के लिए $1 मिलियन स्कीम होती है, एलआरएस नहीं होती. अकाउंट तो इसलिए उनके ऊपर कोई टीसीएस नहीं लगेगा. इवन आज भी नहीं लगता सर. आज भी जो 7.5 लाख के ऊपर तो टीसीएस है ही ना आज भी. तो एनआरआई को उसमें नहीं लगता टीसीएस. टूर ऑपरेटर के ऊपर भी टीसीएस लगा दिया सर. तो जब टूर ऑपरेटर कोई फॉरेन टूर बुक करेगा तो उसके ऊपर वो टीसीएस कलेक्ट करेगा. सो दैट इज देयर एज एन एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी ऑन द फॉरेन टूर्स. हाँ जी. अगर सिर्फ एयर टिकट्स के ऊपर तो नहीं है ना? अगर सिर्फ एयर टिकट्स बुक कराते हैं सर, एयर टिकट्स पे नहीं है खाली, क्योंकि वो फॉरेन एयरलाइन है. बट अगर आप, मैंने आपको बोला पैकेज टूर ऑपरेटर टूर पैकेज देता है. हाँ. सो अब लुधियाना ब्रांच या आपका डीटीबीए पैकेज टूर बनाएगा तो 20% टीसीएस कलेक्ट करना है आपने. हाँ करेगा. सर जी मेडिकल और एजुकेशन पे 5% जो है कंटिन्यू है, उस पे भी 7 लाख की एग्जम्पशन कंटिन्यू है ना? सर वो एज इट इज है, पुराने वाली जो रेगुलेशन है वो एज इट इज है. तो ये 7 लाख पर बैंक का, जैसे आप कार्ड का बता रहे थे, ये पर बैंक का या टोटल साल का? कैसे बैंक में कैसे? पर बैंक पर एसएससी. ओके, पर बैंक में. सर पर ये होता है ना कि भाई हमें एक ही ऑथराइज्ड डीलर डिक्लेयर करना पड़ता है, उसी से बाहर वी कैन सेंड और वी कैन क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं सर. वो ऑथराइज्ड डीलर वो ओडीआई के लिए होता है, बाकियों के लिए नहीं होता. ओके. ओडीआई के लिए एक ऑथराइज्ड डीलर होता है, बाकियों के लिए आप मल्टीपल कर सकते हो. सर आपने अपने बेटे के फीस पे करनी है, 7 लाख रुपए आप अपने अकाउंट से पे कर दो, 7 लाख वाइफ के अकाउंट से पे कर दो, 7 लाख फादर के अकाउंट से पे कर दो, 7 लाख दूसरे मदर के अकाउंट से कर दो, 7 लाख उसके खुद के अकाउंट से पे कर दो. कर सकते हो, किसने मना किया? नहीं, मैं खुद का अपना एसबीआई के थ्रू कर दूं, एक पीएनबी के थ्रू कर दूं, वो भी चल जाएगा? वो भी चल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है. हाँ जी सर. एनी अदर क्वेरी सर? अरुण जी को जाना है ना, वो इसीलिए उन्होंने पूछा है. एक सर फेमा पर भी क्लास लगा लो हमारी. है फेमा पे भी एक बारी कोई क्लास लगाओ. लगा लेंगे फेमा के साथ. श्योर सर, विल डेफिनेटली डू फेमा. थैंक यू गंभीर साहब. फेमा पे भी लगा लेंगे. ठीक है, बिल्कुल करेंगे सर. एक दिन फेमा पे करते हैं एंड फेमा पे भी कर लेंगे. हाँ, फेमा पे भी कर लेंगे और इंडिविजुअल्स वाला करेंगे. फेमा प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स, बिकॉज ओडीआई एफडीआई ईसीबी तो हम बहुत करते हैं, बट इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं करते. सर ये मेंबर्स भी एक आपके आने से पहले मेंबर्स एक क्वेरी डिस्कस कर रहे थे. वैसे तो डिस्कस हो गई थी, फिर भी फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन. तो ये जो एलआरएस के अंदर जो है रेमिटेंस, उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा. तो वो तो अभी रेजिडेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. तो अगर एनआरओ अकाउंट से करते हैं तो वो तो एनआरआई है असेसी, तो उसके ऊपर तो ये टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी होगी नहीं अगर वो एनआरआई. इसीलिए मैं कहता हूँ अरुण जी, सेमिनार के बीच में फोन पे बात नहीं करनी चाहिए.
जब आप फोन पे बात कर रहे थे ना तो ये बात हो चुकी थी अपनी। सो एनआरओ अकाउंट में मैंने गोयल साहब ने पूछ लिया था ये क्वेश्चन। सर एनआरओ अकाउंट जो होता है वो एलआरएस में आता ही नहीं है, दैट इज अंडर $1 million scheme. So $1 million scheme is a separate scheme other than LRS, hence it is not applicable. Okay, there is sir. no TCS on that. Right, sir, right. Any other question, members? So I think there are no other questions relating to this topic. So I would now request Hitesh Bakuji to please propose a formal vote of thanks. Bakuja, please. Namaskar, Avinash ji. Namaskar, sir. Namaskar, sir. Arun ji, namaskar, and to thank namaskar to all the members of the DTBA. Sir, as we know, this is an era of globalization. So it is only natural that many of the citizens of the country are making investments and holding assets abroad. And on the other hand, government is in the process or is forming regulation, as we know, to regulate and to oversee all those investments and holding and trace and track the investments. So it is only natural that these rules have been brought by force. And but the point is that even a small non-disclosure, apart from the undisclosed investment, it can invite penal consequences under the Black Money Act. And the provisions of Black Money Act are really draconian, as we know. So have been very detailed and very in-depth in your approach, sir, and you have, I believe that all the members must be benefited by your detailed deliberation. And I must thank you for sparing your valuable time out of your schedule, out of country, which has benefited all the members of the bar. I would like to give my heartfelt thanks to you for sparing your valuable time, sir. And I would also like to thank all the members of the bar who have spared their valuable time for this discussion and deliberation and made this a success. Thank you, everyone. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank Right, you. sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, Gupta ji, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कोई भी problem Thank हो you, तो Mr. Baku ji. Thank you, WhatsApp Tej ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Right, Thank you, sir, Goel right. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. हाँ ये कितना कितना क्या कम बक्से था करता कल वो रामी होगा ना है